फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। एक्चुअली इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज से इंग्लिश सिखाने का तरीका ही गलत है। इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो मेथड्स चाहिए वो वहाँ बताए ही नहीं जाते हैं। टुडे आई एम टेलिंग यू अ फ्यू वेरी गुड मेथड्स, ट्राइड एंड टेस्टेड वंस। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इंग्लिश को फ्लुएंटली और बहुत अच्छे से बोलना सीख सकते हैं। करेक्ट मेथड्स देखते हैं। व्हाट आर द करेक्ट मेथड्स? वो सही मेथड्स जिनसे कि आप इंग्लिश स्पीकिंग बहुत फ्लुएंटली सीख सकते हैं। So may it be your presentations, your job interviews, your entrance exam interviews, various colleges, or may it be anywhere in your friend circle, these methods will work out for you definitely. Come on, let's begin. Good day all of you, I'm Reena Mahajan and you're watching me on English Oasis. Listen to English speaking Indians. न्यूज़ चैनल्स भी आप वही देखिए जिसमें इंडियंस इंग्लिश में बोल रहे हों, राइट? So the same accent, the same tone, the same pitch, the way of speaking, the way of forming new sentences would be very easily got by you. Listen to the speeches of Gaur Gopal Das, Sadhguru, then the news channels which are having Indian anchors speaking in English. That would be of great help. Number 6 and very important is the mirror technique. Mirror technique means कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए and you start speaking in English, right? Speak without hesitation, without any obstruction. आप बोलते चले जाइए, keep on speaking to yourself, right? And record it all. उस सबको रिकॉर्ड करिए, उसे दोबारा सुनिए, देखिए कि आपने कौन से वर्ड के ऊपर स्ट्रेस नहीं किया, कौन से वर्ड के ऊपर आप बहुत अच्छे से फोकस कर सकते थे, कौन से वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन गलत हुए, कौन से सेंटेंसेस में आप अटक गए और दोबारा से बोलने की कोशिश करने लगे. सो ऑल दैट यू कैन प्रैक्टिस वंस अगेन. दिस इज इक्वली ट्रू विद ऑल द इंटरव्यूज़ दैट यू आर गोइंग टू फेस. इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिरर के सामने खड़े होकर करिए एंड डेफिनेटली श्योर यू विल नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड एनी वे इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, एनी इंटरव्यूअर. यू कैन फेस एनीबडी, राइट? नंबर 7 इज लिसन टू ई बुक्स, chat shows, English speech, podcast, life stories, anything. Listen to them just for 2 minutes and stop playing it and try to speak the same way. जो भी आपने सुना चाहे आप 30 सेकेंड्स का सुनिए और उसके बाद उसको कहीं लिख लीजिए एंड ट्राई टू स्पीक इन द सेम मैनर, सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम पिच, सेम वर्ड्स. Even if you want, you can record it again and listen to it again and correct it time and again. Number 8, speak. डरिए मत, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, खूब बोलिए. पहले अपने रूम के अंदर अपने आप से बोलिए, उसके बाद अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड सर्कल से बोलिए. मेक इट अ पॉइंट दैट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली. मे इट बी कोई हंस रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, उड़ाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. उनसे बोलिए एटलीस्ट आई एम ट्राइंग, यू आर नॉट इवन ट्राइंग. सो प्लीज try to talk in English to all your friend circle, all your teachers in school and colleges, yourself, your family members, whosoever you know well, and try to speak with a person who has a better accent than you. So obviously you will improve. Number 9 is commentary. Play a video of the sound. और आप उस वीडियो के साथ खुद से बोलिए. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. आप कोई मैच देख रहे हैं जिसमें विराट कोहली इज़ प्लेइंग वेरी गुड. हाउ टू सी इट? टीवी की या अपने व्हाटएवर मोबाइल की आप साउंड को बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए and start speaking this way. Virat Kohli is in the crease now. He is very confident. He is in his biggest form. Here comes the bowler. It is a spin ball and here goes the ball on the boundary and it's a 6. Marvelous achievement for India. Kohli is magnificent. So the tone, the pitch, the pronunciation, try to go with that. Speak yourself and don't listen now. आपने सुन लिया, बहुत लोगों को सुन लिया. It's okay. Now speak yourself. Try to give the commentary और रिकॉर्ड करिए उसको. उसके बाद उसको दोबारा से सुनकर अपने आप को रिफॉर्म कीजिए, चेंजेस करिए, whatever. Number 10, the way you can speak very good fluent English.
Build an atmosphere, build a community. ऐसे लोगों के साथ रहिए. Those who really want to speak in English, want to go ahead. Those who really want to speak in English in a very fluent manner, right? So practice within them, stay along with those people and try to speak maximum there in their presence. Google Play Store से आप 2-3 apps download कर दीजिए. One is Talk Now, others are, some are paid, some are unpaid, and you can go ahead with talking to them in English. Talk to those people who really want to improve themselves, their pitch, their pronunciation, and definitely you will be a success. Definitely इनमें से बहुत सारे तरीकों से आप बहुत fluent English बोलना सीख जाएंगे और बहुत सारे पैसे खर्च करके English speaking courses में नहीं जाएंगे. They are useless, worthless. Practice yourself, learn yourself, and subscribe to the channel. If you have liked the video, please like it, share it to all your friends ताकि सब लोग इन methods का benefit उठा सकें.